Hello friends, today I'm gonna show you a new banner design about Laxmi Puja. So let's begin. आज का जो डिजाइन होगा वो बहुत सिंपल होगा. Create a new document like every time. Laxmi Puja. Inches 5 by 3. Resolution 300. इंचेस में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत लोगों के सिस्टम जो है स्लो होता है, इंक्लूडिंग मी. इसलिए पहले इंचेस में डिजाइन कर लीजिए एंड देन व्हेन यू एक्सपोर्ट इन जेपीजी देन कन्वर्ट इनटू फीट, देन प्रेस ओके. Shift plus double click to rectangle, choose any color, set guidelines. I'm downloading these images using AI at a flyer file like the golden color flowers and the rain of gold. पहले बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेंगे. Press P to center align. Press B to bottom align. Select transparent tool. Drag bottom to top. Then select another image. T L top to left align. Okay. Top to bottom align. Control Shift plus I. Will look good. So don't need to transparent bottom touch. पहले एक फ्लावर क्रिएट कर लेंगे यूजिंग एनवेलप टूल. फर्स्ट select ellipse tool, create a circle, then select freehand tool, shift click, select C and E, then copy and paste. और कॉपी कर लेंगे इसका. ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, select envelope tool, then select smart fill tool, then select this, apply, C and E. फिर इसका सेंटर जो है इसके साथ अलाइन कर दीजिए. Control R to repeat. Press Alt, then select all these things and click it. आउटसाइड का जो सर्कल है इसे डिलीट कर दीजिए, इसे हटा देंगे, इसकी अब कोई जरूरत नहीं. इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए एंड इसका इज इनफ. इसके साथ थोड़ा सा बाकी रह गया. ओके, select the design, press Ctrl G to group it. और छोटा सा डिजाइन है, C T top नीचे लाइए, then
इसको भी ऐसे ही राउंड में बिठा दीजिए, इसको ऐसे सेंटर में रख लीजिए। देन कंट्रोल आर टू रिपीट, select this and select this, group it, then okay। इसका कलर गोल्डन कर लेंगे। फर्स्ट select this and control shift Q to select the outline to object, then select like this, control shift E, एक और ऐसे कर लेंगे, then this, then this। डिफॉल्ट फाउंटेन फिल से रिपीट मिरर करें, ये ऐसा हो जाएगा। और इसका कलर जो है लाइट येलो कर लेंगे। फर्स्ट कंट्रोल एक्स, हाइड दिस, देन सिलेक्ट कंट्रोल जी, देन शिफ्ट लेवल, देन कंट्रोल V, ओके, कंट्रोल G, ओके, देन डिलीट दिस, इसकी आप कोई जरूरत नहीं है। इस फ्लावर को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और एक सर्कल इसके अंदर सेंटर्स में बना लेंगे। देन सिलेक्ट द फोटो, फ्लावर पावर क्लिक इनसाइड एंड साइड, सर्कल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। कंट्रोल एंड प्रेस आउटसाइड, इसको इसके हिसाब से बड़ा कर, क्लिक राइट to the cross button to remove the outline, control page down, control G to ungroup, then P, and इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको ऐसे और थोड़ा डेप्थ के लिए शैडो क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट सिलेक्ट कलर, कलर को थोड़ा सा डीप कर लेंगे, डेप्थ लेवल एंड दिस, ओके, रिमूव द आउटलाइन, convert to bitmap, resolution 300, bitmap, blur, person blur, 5 pt is enough। First select the middle text C T, top, sorry, then adjust it with इसका कलर व्हाइट कर लीजिए। Then select this पूजा टेक्स्ट, थोड़ा रोटेट कर लीजिए, व्हाइट, देन सार्वजनिक एंड श्री पूजा गौरी को ग्रुप कर लीजिए, मतलब टूल, select this, control and top, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। select the color white, नीचे सेट कर लेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे।
इनको भी वाइट कर लीजिए। Then ungroup it. Ctrl U with the shortcut. Select drop shadow. हल्का सा शैडो ऐड कर लेंगे। स्मॉल ग्लो, control wave 10 and this will be it is okay. कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डार्क सा। दिस इज ओके। इनको भी थोड़ा सा शैडो दे दीजिए। स्मॉल ग्लो 10। select the color from this. This looks awesome. Select all, then select rectangle, control home, 1.5 pt is enough. Then choose the dark color from the bottom.